Good afternoon and welcome all for today's session. I welcome everyone, those who have joined on the Zoom as well as on the Facebook platform. Today's topic is all about trademark and copyright for your business. So trademark और copyright के सवाल हमें आ रहे थे कि trademark क्या होता है, कॉपीराइट क्या होता है, वो हमारे बिजनेस के लिए कैसे यूजफुल हो सकता है। ऐसे जो सवाल थे, तो ये बहुत सवाल एंटरप्रेन्योर्स कम्युनिटी की ओर से हमें आ रहे थे deAsra फाउंडेशन के पास। तो इसलिए हमने प्रोग्राम आज ऑर्गेनाइज किया कि हम जान ले एक्सपर्ट्स की ओर से कि एक्चुअली ट्रेडमार्क क्या होता है, कॉपीराइट क्या होता है, इन दोनों चीजों का डिफरेंस क्या है और एंटरप्रेन्योर्स के लिए कैसे फायदेमंद हो सकता है। तो ये बताने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं हमारे एक्सपर्ट सीएस गौरव कुलकर्णी। सीएस गौरव कुलकर्णी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। सीएस, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं देता हूँ जो आज हमारे एक्सपर्ट है। सीएस गौरव कुलकर्णी हैज कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन। उन्होंने एलएलबी भी किया है पुणे यूनिवर्सिटी से और वो एसोसिएट मेंबर है इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। और खास बात यह है कि उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी किया है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज में फ्रॉम एएसएल लॉ स्कूल। तो फर्म है एसकेजी के एसोसिएट्स एलएलपी, उसके मैनेजिंग पार्टनर भी है। गौरव सर के पास एंटरप्रेन्योर्स के रिलेटेड बहुत सा एक्सपीरियंस है, इस फील्ड में वो बहुत ही एक्सपर्ट है जो आज हमें इस विषय पे गाइड करेंगे हमारे एंटरप्रेन्योर्स को। मैं सभी दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि आज के सेशन का आप जरूर लाभ लें। आपके जो कुछ भी सवाल है आप या तो चैट रूम में कर सकते हो या बीच बीच में अनम्यूट करके आप अपने सवाल पूछ सकते हो। चलिए आज आगे बढ़ते हैं। तो गौरव जी, पहले अभी उसे अनम्यूट कीजिए या चैट बॉक्स में सवाल आप भेज सकते हो सो दैट सबको आसानी रहेगी। तो ओवर टू यू गौरव सर, प्लीज आप आज हमारे दर्शकों को गाइड कीजिए ट्रेडमार्क और कॉपीराइट विषय। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू देअसरा। तीसरा है टाटा का, फिर निके का भी है, पेप्सी का है और पीटर इंग्लैंड का। So ultimately ये मार्क्स, when we see all these marks, what comes to your mind first? सबसे पहली बात आती है the name of the company. What we recognize is the name of the company. Then दूसरी बात जो हमारे दिमाग में आती है कि quality of the goods what they provide or the services what they provide. Thirdly, emotions are the most important thing which we try to associate with our consumers. So any industrialist or any organization tries to catch those emotional hold करना चाहती है consumers के ऊपर ताकि they want to sell their products. So ultimately marks देखने के बाद we try to associate these few things with them. So brand connection with the ultimate emotions of the customers is an important point which we need to understand. Now, what do you mean by mark and trademark? अभी इसका सबसे आसान और सबसे important point है कि when a child is born, हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले we give him or her a name. Similarly, when we start a business, we have to give a name to our business. So most important is कि अगर हम लोग बहुत बार ऐसे होता है कि when a child is born, we try to scrutinize n number of names. लड़का हो, लड़की हो,
तो हम लोग काफी नाम्स के ऊपर सोचते हैं कि कौन सा नाम एग्जैक्टली रखना है. Similarly, when we start a business, we need to think about what name we want to give to the business. ऐसा नहीं है कि बिजनेस चालू किया है and yes we want to give a certain name to the business, बिजनेस चालू हो गया. और एक बात इंपॉर्टेंट है इसमें, इवोल्यूशन अगर हम देखते हैं कि हाउ अ मैन इवॉल्व, देयर आर टू थिंग्स. फर्स्ट देयर वाज पिक्चर लैंग्वेज. हम लोग कुछ केव्स में जाते हैं, वहां पे हम लोग देखते हैं कि देयर आर पिक्टोरल थिंग्स व्हिच वी ट्राई टू एसोसिएट. सो पिक्चर, व्हाई पिक्चर्स? बिकॉज पिक्चर्स से हम लोगों को याद आता है सर्टेन थिंग्स, वी कैन रिमेंबर सर्टेन थिंग्स बाय लुकिंग एट अ पिक्चर. Similarly, when a child starts going to a school, what a teacher does is try to develop his cognitive skills by showing him different types of colors. तो इसका मतलब है pictures and colors are the primary things which even a child remembers. Similarly, in a business, why a mark and associating certain colors to the mark, it becomes easy for consumers to associate a mark to a certain product or a service. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारा जो मार्क हम लोग करते हैं, ट्रेडमार्क जिसको हम बोलते हैं, we'll see the definitions because I don't want to go into much of the legality of the definitions because ये definitions मैंने यहाँ पे लिखे हैं. I've tried to cut short the definitions, but these are just for the sake of reading it. And लेकिन जो meaning है उसका, that is what I'm trying to convey, कि ultimately we need to understand the reason behind why we need a mark or why we need to associate a mark to a certain business. So if we refer these definitions, what do a mark include? A mark includes a device, brand, heading, label, name, signature, word, letter, numeral, shape of goods, packaging, or combination of color or any combination thereof. So this is a mark basically. And what do you mean by a trademark? तो वो नीचे है. So trademark is a mark capable of being represented graphically and which is capable of distinguishing the goods or services of one person from others. So that is important. So we need to distinguish our goods and services from the goods and services of others, and may include shape of goods, their packaging and combination thereof. So ultimately एक बात हमें ध्यान में रहना चाहिए, एक सबसे the foremost important thing is what is a mark basically? A mark assists you in doing trade. So बिजनेस करने के लिए असिस्टेंस मिलता है हम लोगों को हमारे ट्रेडमार्क से, हमारे ट्रेड नेम से. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. कोई भी हम लोग बिजनेस चालू करने से पहले वी नीड टू थिंक कि कंपटीटर्स भी बिजनेस कर रहे हैं, हम भी बिजनेस कर रहे हैं. सो व्हाई अ डिफरेंट मार्क इज एसेंशियल? टू रिकॉग्नाइज आवर बिजनेस फ्रॉम अदर्स, टू हैव डिफरेंशिएशन बिटवीन आवर बिजनेस एंड देयर बिजनेस. So now what we can see is what are the features of a trademark, because यहाँ पे हम लोग we can see how we can have a mark or how we can develop our own logo and a trade name. जैसे हमने देखा कि since we want to associate our business from others, the name should also be a different name. It need not be a common name. क्योंकि बहुत बार क्या होता है when we want to start a business, हम लोग क्या सोचते हैं? Probably I would say कि I would like to keep my mother's name, I would like to keep my father's name, my wife's name, my child's name to the business, या मेरा खुद का नाम होना चाहिए, but then it becomes a very common name. So the most foremost is it must be distinctive. So what do you mean by a distinctive? So it must be a combination. There must be a combination of few things, few words. The distinctiveness can be, distinctiveness जो है वो दो चीजों से होता है, एक तो inherent distinctiveness और acquired distinctiveness. But what do you mean by inherent distinctiveness? So inherent distinctiveness means the distinctiveness which by forming or combination of two words. जैसे एक कोई डिक्शनरी मीनिंग का वर्ड है, फॉर एग्जांपल क्लासिक. क्लासिक इज अ डिक्शनरी वर्ड. इफ यू से अ क्लासी, बिकॉज क्लासी इज अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, so it doesn't have any dictionary meaning attached to that word. So important thing is when a mark is or a word mark is devised, डिक्शनरी वर्ड लो, उसको प्रीफिक्स से सफिक्स करो वर्ड्स, so you make it a distinctive word which is not there in a dictionary. That word will get registered. So you must remember that when you are devising a word for your business, word in a sense it also accompanies the tagline. So everything associated with your business has to be a distinctiveness. It must be distinctive. Second, it must be easy to spell, pronounce, write legibly and remember. इसमें एग्जांपल हम किसका दे सकते हैं? अगर आप शूज खरीदने जाते हो तो किसका रहते हो? बाटा का रहते हो. सो बाटा इज इजी टू स्पेल, इजी टू प्रोनाउंस. जैसे हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा टाटा का मार्क था, सो टाटा इजी टू स्पेल, इजी टू राइट. एप्पल हो गया.
So all these marks are very easy to spell, write, pronounce, and remember as well. So because if we devise a word which is a very complicated word, probably people won't remember it. So we need a word or a logo which is easy to remember as well. कुछ marks ऐसे होते हैं कि they are very simple marks but easy to remember, so we can associate certain things to that particular mark. It must be a non-descriptive word, the third thing. So it is very important. What do you mean by non-descriptive? क्योंकि descriptive होगा तो anybody can use it in their own business. It won't be granted to your business. So ultimately, what do you mean by non-descriptive? So for example, if you're doing a cooking business, and in the cooking business, you tend to say कि suppose मेरा business का नाम है रसोई, for example, but rasoi is now associated to your cooking, what you are doing. So directly associated with the work or the services which you are providing won't be granted. It must be non-descriptive. So it should not describe your business as such in the trademark or the mark which you are devised. It should be different than that. So it should be a distinct one. So that is the first point what we are discussing. It must be distinct, easy to spell, pronounce, non-descriptive. Fourth important point is कि geographical, it must not be a geographical name of a place. अभी यहाँ पे एक कैच है, बहुत बार क्या होता है, we feel कि पुणेरी मिसळ should be registered, कोल्हापुरी मिसळ should be registered, और से कोल्हापुरी चप्पल has to be registered. So we want certain places to be associated, but then what people, अभी जैसे we are having say mangoes in this season, so maybe Ratnagiri mango, Devgarh hapus. So these things we want to associate, but then can we get registration of a trademark on that? No, it is not allowed because you cannot use name of a geographical place. So per se, what happens is क्यों नहीं देते basically? Because the buyer will believe that the goods are associated to that particular place. That is important. That is why it is not granted. So probably if a geographical name is not associated with that particular place, it will be granted. Sula wines, for example. So ये जो सारे places से associated names है, we need to be very careful while applying for a trademark or while keeping that name to our own business, because that is important. Because initially we start our business. Ultimately क्या होता है कि when we start a business, we are there to grow the business. Why we need a trademark is because it gives value to your business. The more you are into the business for n number of years of time, so 5 years, 10 years, 15 years, 20 years, you do your business. The mark associated with your business, the trade name associated with your business gets goodwill in the market. That gets value. आपके trademark को value मिलती है. Ultimately, when a business is sold or any merger takes place, कोई भी transaction business related होता हो तो वो goodwill is associated with that, which fetches a value, a great amount of value. The last point in this is it should be short and appealing. जैसे हमने अभी देखा कुछ marks का हमने नाम दिया, Havels, Apple, Tata, Bata. These are short and appealing. Ultimately, it should appeal to the normal consumers. अभी एक पॉइंट यहाँ पे है कि जैसे हमने डिस्टिंक्टिवनेस में देखा था कि what do you mean by inherent distinctiveness, तो यहाँ पे हम लोग वैसे ही acquired distinctiveness, because when we say Tata's, यहाँ पे एक होता है कि it is a surname as well. So can a surname be registered? So per se it cannot be registered, but it is an acquired distinctiveness. How it becomes an acquired distinctiveness? Acquired distinctiveness is a case where a mark is used or a particular name is used since ages. For example, the classic example what we can give in case of an acquired distinctiveness is Kirloskar. The mark of Kirloskar is used since more than 100 years now. So the point is, when you are using a particular trade name for a considerable amount of time, it gains acquired distinctiveness in your business. So ultimately, the main and the crux of the business, the crux of keeping name to a business is inherent distinctiveness. So it must be a distinctive and it must be inherent distinctive. So when you are forming or combining different words, it should form a different word. That different word will get registered. Similarly, when you are devising a logo, the logo should be a unique logo, distinct from other logos. Not किसी का copy करके हमको registration नहीं करना, because it won't be granted, because we'll see the registration process, it becomes a deceptively similar mark. Now, what are the functions of a registered trademark? So there are different functions. In case of manufacturing sector, जैसे हमने कुछ marks initially देखे थे. In case of manufacturing sector,
it identifies the product and its origin. So when we see a mark or a trade name, what we can identify कि वो product हम लोग identify होता है. जैसे हमने देखा कि टाटा, so हम लोग identify करते हैं कि yes, this is a car which is by Tata's. Mobile, Apple, we recognize the product immediately कि ये Apple का मोबाइल है, Apple का लैपटॉप है, Dell का लैपटॉप है. So all these things we can identify the product by looking at the mark. It guarantees the quality. Apple का मोबाइल, Dell का लैपटॉप, Apple का लैपटॉप. So it guarantees the quality कि yes, इसकी quality अच्छी ही होगी. Then it advertises the product. So the main important point is if we are into business, what the mark does is it advertises your product. Acer ka laptop, so it advertises the product. So probably if I'm using an Acer laptop and if it runs well for a number of years of time, तो मैं क्या करूँगा, अगली बार जाने के टाइम पे मैं देखूंगा कि Acer की प्राइस क्या है और या तो फिर Apple की प्राइस क्या है. So the point is it advertises your product in the market. Then it creates the image of the product in the mind of the consumers. So when we say any havels, बोलते हैं हमारे दिमाग में क्या आता है, इलेक्ट्रिक फैन, इलेक्ट्रिक वायर्स, से गीजर. So image of the product is created. When you see a particular mark, immediately the image is created in your mind. So that is more and more important because business हम लोग जब set कर रहे हैं हमारा, when we are into establishing a business, what we need to understand is कि if we create a mark or a name which is unique, people will recognize our business by looking at the mark and the name of the business. So it immediately clicks, yes, ये इसका product है, ये बाटा के shoes है, ये निके के shoes है. So क्या होता है कि वो correlation हो जाता है उसमें. So when we see a sportsman wearing a certain T-shirt or a certain or C8 की उनके हाथ में bat है तो C8 देखते याद आता है कि yes, tires. So this is the power of the mark which is created by those companies. At the same time, what we can do, yes, in our business we have to establish a mark, we have to establish a business unique name, we have to have a logo which definitely creates mark in the mind of the customers. And all these things, it identifies the product, guarantees the quality, advertises the product, it creates the image of the product. So ये चारों चीजें होती है. Similarly, ये मैन्युफैक्चरिंग अगर सेक्टर में हो सकता है तो सर्विस सेक्टर में क्या हो सकता है. So we'll see in the next slide. Yes. So in service sector, अभी at the bottom you can see few logos. आप नीचे कुछ logos देख सकते हो. And yes, वो logos देखने के बाद we can definitely associate a few things with us in our day-to-day life. In fact, I would say Amazon, Zomato, Dunzo, and yes, of course, Facebook, where even the program is currently being live. So अभी ये देखने के बाद there are few things which you can associate directly. अभी I would, the points mentioned above are more or less similar to the manufacturing sector. It identifies the service of the provider, it guarantees the quality, it advertises the services offered, it creates an image of the services in the mind of the consumer. So we have points more or less are similar to the manufacturing sector only. But यहाँ पे what I would like to say is, अब ये लोगों के बारे में हम लोग कुछ डिस्कस करते हैं या कुछ डिटेलिंग में जाते हैं ताकि you will also get a few of the things aware about. अभी जैसे Amazon का हम लोग we are looking at the Amazon logo, what we can see is Amazon written in the black. There is one arrow which is going from A to Z. What we can understand from that is the entire product range from A to Z is provided on the Amazon website. So while devising that particular logo, that kept that particular thing in mind कि एक arrow A से Z को जाना चाहिए ताकि पूरी product range यहाँ पे depict हो. So it's not that कि हम लोगों को सिर्फ logo बनाना है. We have to put in certain ideas into the logo. Dunzo का, now if you see the Dunzo logo, there is one lightning image in the alphabet D. What does that indirectly tell us? कि lightning speed पे we deliver the goods to the customers. So ultimately, they want to show certain things or they want to tell us. अभी जैसे अपना Facebook is in blue. They want to engage. Blue color is associated with engagement. So they want to engage young youth on the social media platform. So there are certain colors, there are certain things which definitely associate with your business or the services which you provide. So it's not only about the name what you're devising. When you're developing or designing a logo, the most important
इम्पोर्टेंट थिंग इज कि वहां से आप बताना क्या चाहते हो अल्टीमेटली, क्योंकि when you are providing a services like Amazon, A to Z services. So when we go on Amazon platform, we get everything over there, A to Z. Dunzo, lightning speed delivery is received at our end when you send a thing from one place to another, any document or goods. So ये चीजें बहुत important है. When you are designing a particular logo, we need to understand what business we are going to do or what business we are doing. Likewise, similar lines पे हम लोग को logo design करना है. अभी at times you can say कि we are not designers, we are into a business. I can definitely understand क्योंकि ये काफी queries हम लोगों के पास आते हैं कि how can I design my logo as such. But the best answer is कि though we are not designers, person who designs a logo, you need to sit with him. You need to tell him certain things like what color you like, why you like why a particular color. Other क्या होता है जैसे मैंने बोला कि there are certain colors which can be associated. जैसे for example EV का हम लोग जब बोलते हैं नाम लेते हैं, the color which gets into our mind is a green color because it's non-polluted vehicles, EV. So green color, if we can associate with EV, so naturally whenever you will develop a logo or design a logo, so green color will be somewhere form part of that particular logo. So there are certain colors which are associated to certain businesses. So we need to sit to that extent and we need to think on that. How can we develop a logo? What should be the contents of the logo? Design उसका कैसे होना चाहिए? Color combination क्या होना चाहिए? And similarly, can a logo be different from the name of the business? Yes, it can be different. It need not be similar or same. आपका logo अलग हो सकता है और आपका business का name अलग हो सकता है. So that is also an important aspect because what the ultimate company का name can be a different name. It can be a private limited company. It can be a sole proprietary. It can be a partnership. Any form. It can be a limited liability partnerships. So the name of your enterprise or your organization can be different. The logo what you're designing can be different. It can be unique. It has to be a unique color and distinctive. Now, the important point is how to register the mark. So, what are the fundamentals of registering a mark? अभी इसमें हम लोगों को क्या देखना है? Minimum time कितना लगता है? 6 months. So, the simple answer is it takes 6 months to register a mark. But there are certain challenges which are there when registering a mark. ऐसा नहीं है कि हमने mark वहाँ पे application file किया और हम लोगों को मिल गया. ये भी हो सकता है. But it goes through a process. So registration of a trademark is a process. Important aspect is कि बहुत बार हम लोग देखते हैं कि ये process करने से ही लोग डरते हैं कि नहीं मुझे नहीं करना है. I don't want to go for trademark. But then we need to remember one thing. It's not a cost. It's an investment. Always we need to remember one thing. Any IP you register is an investment you do. That is the prime and the foremost important thing. So whatever time is required registering any IP, let it be patent, let it be design, let it be copyright or a trademark. So the time you require to register your intellectual property is an investment, and the amount, it's not a cost. Why an investment? Because it fetches you a value. जैसे हमने पहले कुछ slides में discuss किया, it fetches you a value. ये registration की एक process होने के बाद I will give you an example. So ultimately, when we file an application within 6 months on the shorter side, if no objections or oppositions are received, the mark is registered. The initial process of examination of a mark takes approximately 2 months. जहाँ पे trademark registrar examines the mark. If no similar or deceptively similar of marks or trade names are found, the mark gets published in the journal for a period of 4 months. सबसे important बात ये होती है कि there are, when we file an application, there are 45 different classes. What do you mean by a class? Classes are service class and manufacturing classes. So हम लोग को first identify करना है कि कौन से पर्टिकुलर क्लास में हमारे गुड्स और सर्विसेज फॉल हो रहे हैं
उस हिसाब से we have to make an application. We can make an application under all classes. Yes, definitely we can make, but then we need to for making an application, definitely we need to spend that much of amount. So probably under, if we go under one particular class where our goods or services fall, we have to identify that class. We can file an application in that particular class. After filing an application, if scrutiny takes place, first documents are scrutinized, then the mark is scrutinized compared with other marks. ट्रेडमार्क रजिस्ट्री में अंडर दैट पर्टिकुलर क्लास जितने सारे मार्क्स है वो मार्क आपके मार्क्स से कंपेयर किए जाएंगे. ऑन कंपेयरिंग दोज मार्क्स, वो मार्क्स कंपेयर होने के बाद इफ एट ऑल दे आर नॉट सिमिलर or deceptively similar. Now here one word I'm using is similar and deceptively similar. So similar mark means a mark which is directly similar to your mark. तो अगर लोगो है, अगर नाम है, तो we cannot say कि अगर एक, जैसे मैंने बोला कि क्लासिक है, हमने क्लासिक डाला, बट इफ यू से कि माइनर चेंजेस करके हम लोग डालते हैं तो दैट आल्सो मे क्रिएट अ प्रॉब्लम इफ ऑलरेडी अ मार्क इज रजिस्टर्ड. So we need to be very careful while making an application. If a particular word is already registered, we cannot, just by deleting one alphabet, we cannot say कि I have applied with a different name, because it may make a deceptively similar case and it may get rejected. So examination takes place for 2 months. After that, the mark is published in the journal for a period of 4 months for general public to oppose to our mark. What do you mean by that? कि कोई existing businessman, if he is doing a business with that particular logo, a trade name, he can oppose to our application, saying that this application won't be, rather मेरा similar mark है and I object to this particular application. So if you see, if we don't receive any opposition, who raises an opposition? General public raises an opposition. So if no opposition is received from the general public, now here one important point is, if at all their marks are registered in the trademark registry, then only they can oppose in the trademark registry. If at all I am not registered, then I don't have a forum under Trademark Act. I can file a civil suit for that, saying that my mark is being infringed if I am unregistered. So unregistered लोगों को trademark registry में they cannot oppose if the mark is published in the journal. And the most important aspect is your mark gets a registration certificate for a period of 10 years. So हम लोग ये जो सारी प्रोसेस कर रहे हैं, और उसके बाद when the mark is registered, the registration certificate is granted for a period of 10 years. After 10 years, what? It can be renewed continuously for a period of 10 years. हर 10 साल के बाद हम लोग रिन्यू फी भर के we can renew it for 10 years. So ऐसा नहीं है कि we cannot renew it till the time the business continues, the mark, the trade name, the logo gets continued. So this is by and large, in short, the process for registration of a trademark. गौरव सर, यहाँ पे कुछ सवाल है, मेरा ख्याल है हम एक सवाल ले लेते हैं थोड़े से, जो हमारे दर्शकों के ओर से सवाल है. तो पहला सवाल राजीव लाड़ जी का है कि वो आर्किटेक्ट बाय प्रोफेशन है, हाउ टू प्रोटेक्ट द डिजाइन. गुड क्वेश्चन. डिजाइन अगर आपका है पर्टिकुलरली, ऑफ कोर्स वी नीड टू गो इनटू द डिटेल्स कि डिजाइन आप जो कौन सा बोल रहे हैं, स्पेसिफिकली व्हाट काइंड ऑफ डिजाइन. बट देन डिजाइन के लिए देयर इज अ सेपरेट एक्ट, सेपरेट ट्रेड, rather I would say separate IP for that. rather डिजाइन के अंदर हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं, because design gets registered under design. There are 4 types of protections. One is trademark, copyright, patent and design. So your particular intellectual property can fall, ये चारों में से किसी के अंडर भी फॉलो सकता है. So probably I would say in your case it will fall under design and application should be made under design act. ओके, धन्यवाद गौरव जी. राजीव जी, आई होप आपको आपका जवाब मिल गया होगा. दूसरा सवाल यहाँ पर है दीप्ति बोरसे मैडम से. इफ वी रजिस्टर अ मार्क इन क्लास 25, देन कैन अदर पर्सन रजिस्टर सेम मार्क इन अदर क्लास? ये भी बहुत अच्छा सवाल है. ये सिमिलर क्या होता है कि मार्क कैन बी रजिस्टर्ड अंडर डिफरेंट क्लास एज वेल, बिकॉज when we get registration under that particular class. So particularly when we register a mark under class 25, a similar mark can be registered under different class. Even there is one Supreme Court verdict on that as well, कि जहाँ पे place of sale is also considered very important. When
क्योंकि जब स्क्रूटिनी होती है पर्टिकुलर मार्क की, व्हाट इज बीइंग चेक्ड इज आल्सो द प्लेस वेयर द गुड्स आर सोल्ड. फॉर एग्जांपल, अगर मैं जूते बेच रहा हूँ एंड डेयरी प्रोडक्ट भी है, तो डेयरी प्रोडक्ट्स आर सोल्ड इन अ डेयरी एंड say boots or say chappals are sold in a different shop. So place where the goods are sold is also important. See, the primary and the foremost important thing in case of a trademark क्या होता है कि when you buy a good or a service, जैसे हमने देखा कि ये सारी चीजें आप एसोसिएट करते हो कि you remember certain quality, you remember the characteristic of the good, you remember the quality of the goods. So deception नहीं होना चाहिए, किसी को हम लोगों को फंसाना नहीं है ultimately, and ना ही हम लोगों को फंसना है. तो ये जो प्राइमरी इंपॉर्टेंट थिंग है, दिस इज व्हाट इज बीइंग चेक्ड एट द रजिस्ट्री लेवल एज वेल. अदर यही वो चेक करते हैं कि डिफरेंट, अगर हम लोग क्लास बोलते हैं तो क्लास देखने भी चाहिए कि एग्जैक्टली व्हाट इज द नेचर ऑफ गुड्स. सो टुमारो आई कैन नॉट डायरेक्टली से कि इट विल बी रजिस्टर्ड, बट द पॉइंट इज कि वी नीड टू सी कि वहां पे पॉइंट ऑफ सेल भी आपका क्या हो रहा है, कि कैन दोस गुड्स बी सोल्ड अंडर वन काउंटर. नहीं तो क्या होगा कि आई एम जस्ट ट्राइंग टू ब्लफ अराउंड माय प्रोडक्ट बाय सेइंग कि नहीं वो उनकी क्वालिटी का है. So we need to be very careful in that. But then yes, the answer to your question is a similar mark. जैसे अमूल का है, अमूल also sells say undergarments and as well as it sells say ice cream and chocolates as well. Both the marks are there in the system, but under different class. थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया दीप्ति जी. आई होप आपको आपका आंसर मिल गया होगा. तो चलिए सर आगे बढ़ते हैं, और सवाल है वो हम आगे कंटिन्यू करेंगे. सो प्लीज हमें बताइए कि ये जो ट्रेडमार्क है, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं. रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट इज कि व्हेन यू रजिस्टर योर मार्क, वहां पे आर होता है. इन द सर्कल यू सी आर. बहुत से लोगों का कंफ्यूजन होता है कि व्हाट इज टीएम एंड व्हाट इज आर. TM is when you are filing an application. हमने मार्क डिवाइस ट्रेड नेम हो या लोगो हो, हमने वो डेवलप किया, बट वी आर इन द प्रोसेस ऑफ फाइलिंग एन एप्लीकेशन. वी हैव फाइल्ड एन एप्लीकेशन, then you put TM. After that, what happens once it gets registered, it becomes R. That means registered. So there are two things. When we see a mark, we need to see whether it's a TM or it's an R basically. Now, where can you use your trademark? जैसे हमने देखा कि फ्यू यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स या कुछ पॉइंटर्स मैंने डाले कि ऑन द गुड्स ऑफ द प्रोडक्ट, ऑन द इनवॉइसेस. सो देयर आर टू थिंग्स यहाँ पे हम लोगों को देखना चाहिए कि व्हेन, जैसे हमने शुरुआत में देखा कि भाई वी आर मेकिंग अ मार्क, हम लोग हमारे बच्चे का नाम क्यों रखते हैं? बिकॉज वी वांट टू गिव अ नेम टू हिम और हर. सिमिलरली when we are saying we want to give name to our business, we want our child to grow, we want our business to grow. हम लोग हमारे बिजनेस में उन्नति करना चाहते हैं. हमारे लोगों से हम लोगों को नॉट ओनली नेशनली बट इंटरनेशनली जाना है. हम लोग जैसे मोदी जी ने बोला है वोकल टू लोकल, so we want to be more vocal towards our products and services. So ultimately what we want to do is we want to reach to the ultimate consumers. कहाँ पे भी होने चाहिए, दुनिया भर में हमारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पहुंचने चाहिए. वो रिकग्निशन हमको हमारा मार्क देगा, हमारे टैगलाइन देगी, हमारा बिजनेस का नाम देगा. तो जितनी ज्यादा जगह पे हम लोग वो डाल सकते हैं डालना चाहिए. जहाँ पे एक जनरल लिस्ट है कि ऑन द गुड्स, ऑन द प्रोडक्ट्स हम लोग डाल सकते हैं डेफिनेटली. ऑन इनवॉइसेस श्योरली वी हैव टू पुट इट ऑन इनवॉइस. इवन वन थिंग इज देयर, अभी इनवॉइस वी हैव मेंशन्ड हियर. when we say we are using our mark from say 5 years, 10 years, 2 years, 1 year, and we are putting an application, तो बहुत बार ऐसे होता है कि we are putting an application, filing an application for registration of a trademark, और वहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि we are using the mark, लेकिन हमने application नहीं किया. तो invoice is considered as a primary evidence कि yes हमारे invoice पे ये दिन से mark आ रहा है, and we are showing कि yes we are printing it on the invoice. So invoice पे it's very important and crucial. क्यों इनवॉइस पे क्रूशियल है? बिकॉज on the invoice even the date is there on when we are selling a product or we are providing services. So invoices are very important because बाकी के कैटेगरीज के केस में proving a particular date is very difficult. लेटर हेड्स, ऑफ कोर्स लेटर हेड्स पे आना चाहिए. डायरीज है, गिफ्टिंग मटेरियल है, अब एम्प्लॉइज हो या दिवाली, जैसे दिवाली इज देयर, क्रिसमस के टाइम पे या न्यू ईयर के टाइम पे हम लोग कैलेंडर्स देते हैं, डायरीज देते हैं.
सो गिफ्टिंग मटेरियल के ऊपर अगर हमारा लोगो आता है, हमारा नाम आता है, तो डेफिनेटली इट असिस्ट इन spreading the goodwill of our business. It increases the goodwill. It reaches to the ultimate consumers. It reaches to the masses. Uniform, yes, of course, there are certain offices where they have uniforms as well, where logos, their names are printed, main door of the enterprise, signages, boards, emails, stationery, even emails as a very good example. When we are sending email, बहुत बार ऐसे होता है कि we need to give our logos in that. जितना ज़्यादा हम लोग उसका प्रचार करेंगे, the more we use it, our logo, our name, our brand name will reach to the consumers, will reach to the masses. We have to ensure that it reaches to a larger public so that goodwill grows in the market. अभी इसका जैसे मैंने बोला था बीच में, I want to give an example. In one of our clients' case, when we sold their business, the business was running for say past 25 to 30 years, 30 साल से बिजनेस कर रहे थे. But when business का valuation निकाला गया, तो only for their particularly for their logo, the valuation went beyond 70 to 80 lakhs. 70 to 80 lakhs उनके सिर्फ लोगों का valuation आया. So that valuation आया because from past 25 to 30 years the mark what was being in use. जो अदर वैल्यूएशन से बिजनेसेस वो वैल्यू डिफरेंटली, सो वो अलग आते हैं वैल्यूएशंस में. सो इनके सब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, आपका शेयर्स की वैल्यू अलग आती है, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू अलग आती है, बट ओनली फॉर लोगो उनका इतना ज्यादा वैल्यूएशन आया. सो जैसे हम लोग बोल रहे थे कि यू स्टार्ट यूजिंग योर लोगो और एज वेल एज योर यूनिक ट्रेड नेम फ्रॉम डे वन से यूज करेंगे, बिकॉज वी फील कि नहीं कॉस्ट है, अभी नहीं करते हैं, बाद में करते हैं, अभी थोड़ा सा पैसा इकट्ठा होने दो, देन वी विल स्टार्ट यूजिंग द लोगो, देन हम लोग लोगो डिजाइन करेंगे. नो, एब्सोल्युटली नो. इट इज योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यू हैव टू प्रोटेक्ट फ्रॉम डे वन इटसेल्फ. कोई भी बंदा आपका बिजनेस कॉपी करके, आपके ही ब्रांड नेम से शुरू करके आपके ही प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बेचने लग सकता है. ही विल कॉपी योर बिजनेस. यू हैव टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम दैट. वो अगर हम लोग करते हैं, अभी जैसे हम लोग 2 साल से वी आर फेसिंग कोरोना. व्हाट वी हैव डन इन कोरोना, एवरीबॉडी हैज टेकन 2 शॉट्स ऑफ आइदर कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड हो. व्हाई? बिकॉज वी वांट आवरसेल्फ टू बी इम्यून फ्रॉम कोरोना वायरस. लाइकवाइज, registering your IP immunes your business from any other business copying your business. सबसे बड़ी इम्यूनिटी हमारे बिजनेस को तभी मिलती है इन केस ऑफ ट्रेडमार्क. अगर हमारा मार्क, हमारा यूनिक नेम या लोगो रजिस्टर होगा तो इम्यूनिटी मिलती है. किस चीज से इम्यूनिटी मिलती है? फ्रॉम एनी अदर पर्सन कॉपिंग आवर बिजनेस. कॉपिंग डजंट मीन कंपटीशन. कंपटीशन तो रहेगी मार्केट में. बाटा भी फूड बेचेगा और कोई कंपनी भी फूड बेचेगा, टाटा भी कार बेचेंगे, हुंडई भी कार बेचेंगे. बट देन वी एसोसिएट ईच एंड एवरी क्वालिटी फ्रॉम द seller. So ultimately that protects, that gives us a different right. So अगर हम लोग अनरजिस्टर्ड है तो कोई भी बंदा हमारा सेम, जैसे हम लोग अभी देख रहे हैं कि चाय के केस में बहुत कंपटीशन है. एवरीबॉडी हैज गॉट, कुछ लोगों के केसेस भी चल रहे हैं, ही इज यूजिंग आवर ब्रांड नेम बट ही इज नॉट टेकन माय फ्रैंचाइज. क्योंकि क्या होता है, द एंड रिजल्ट इज यू कैन हैव अ फ्रैंचाइजिंग मॉडल. व्हेन यू रजिस्टर योर मार्क, अगर आपका रेस्टोरेंट है, होटल है, you can enter a franchising, you can have a franchising agreement, you can license your mark in case of manufacturing sector, you can get royalty out of it. So right from developing a mark, registering it, and बाद में उसका utilization, commercialization of your trademark is utmost important. कि वो commercialization कब होगा? Infringe कोई करेगा तो you can gain royalty from that, you can protect your business, and definitely yes, you can gain money out of it by commercializing it. Franchising करो, licensing करो, assignment करो. So you can enter into different type of agreements and commercialize it. So particularly this was for the trademarks, Nitish, and now we can proceed further with corporate. So yes, Nitish. तो बहुत से सवाल भी आ रहे हैं गौरव सर, लेकिन मैं गुजारिश करूंगा सबसे कि आपके जो सवाल हैं वो हम आखिर में लेंगे. थोड़ा सा कॉपीराइट का जो पार्ट है वो भी हम कंप्लीट करेंगे और फिर सबके सवाल जरूर हम आंसर करेंगे. सो चलिए गौरव सर, थैंक यू ट्रेडमार्क के बारे में बताने के लिए. थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हमें बताइए कि अभी कॉपीराइट क्या है. कॉपीराइट के बारे में आपसे विस्तार में जानना चाहेंगे. Yes, honestly speaking,
जो भी जितना भी टाइम आईपी के डिस्कशंस में दिया जाएगा वो कम है. आई कैन अंडरस्टैंड दैट बिकॉज इवन व्हाइल इनटू प्रैक्टिस फॉर सो मेनी इयर्स बहुत सी चीजें हैं यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए. देयर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स, सो आई कैन अंडरस्टैंड दैट मस्ट बी plenty of questions in the mind of each and everyone. So we'll take the copyright because the copyright slides हम लोग लेते हैं. What do you mean by copyright? So copyright सुनते ही हमारे मन में आता है कि music the best thing जो हम लोग probably everybody listens to music every day. So music is the best thing what comes to our mind. क्योंकि म्यूजिक इंडस्ट्री में कॉपिंग इज अ वेरी फ्रीक्वेंट थिंग. हम लोग बोलते हैं कि ये गाना किसी और ने चुराया है. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? So are they copying the entire song? No, they are copying few lines from the song. Does it amount to copying? Of course, to some extent, yes, it amounts to copying, but we need to see it on a case-to-case basis. Moving towards the slide, we'll see copyright में the most and the foremost important person is the creator, who is also the author. So I'll just run through the slide first and we'll go into the discussion. Copyright describes the rights given to the creator. So creator is very important. For what? Literary, musical and artistic work. Artistic work, what it forms? Novels, poetry, songs, paintings, sculptures, films, choreography, architecture, technical drawings, computer programs. So even drawing, so probably से design का जो एक query आया था बीच में, we can even see from the point of view of copyright registration. So copyright के अंदर भी वो जा सकता है. What do copyright provide? Copyright provides exclusive right to the creator to use or authorize others to use their work. So ultimately, when I'm creating a music, I can authorize others to use my music or a part of my music. When I'm writing a book, I can authorize others to use, say, adapt certain things from my book, from my novel, make a movie on that. So similarly, the creators have got exclusive right of that. The third point, the creator of a work can prohibit or authorize its reproduction. So ultimately, अगर कोई और बंदा, if you want you are not supposed to use my work. He is not authorized to reproduce it. So those rights I get when I have a copyright registration. I'll move to the next slide. This is an important slide because जैसे हम लोगों ने दो चीजें देखी यहाँ पे इस slide में कि creator. So who is a creator is an author, and who is an author? The author of the work is the first owner of the copyright in the work. So when we say कि author is the first owner of the copyright, अब ये थोड़ा सा technical term I can understand, but who is an author we need to understand because there are different I would say areas where the author is a different person. So if the work is a literary work, so literary work के केस में literary मतलब अभी क्या हो सकता है यहाँ पे book हो सकती है. Any writer forms part of a literary work. So in case of a literary work, the author of the work, so जो बंदा लिख रहा है, he becomes author of the work. अभी यही काम अगर कंप्यूटर जनरेटेड होगा, लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक वर्क अगर हम लोग कंप्यूटर से कर रहे हैं, द पर्सन हु कॉजेज द वर्क टू बी क्रिएटेड बिकम्स द ऑथर ऑफ द वर्क. यहाँ पे म्यूजिकल वर्क, अभी who creates a music? A composer creates a music. So composer in relation to a musical work becomes author of the work. Artistic work, other than a photograph, so the artist. Photograph के केस में the person who takes the photograph. Cinematography के केस में the producer of such film. And sound recording के केस में producers. अभी एक बहुत ही कॉमन एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज, क्योंकि बहुत से लोगों को होता है कि मैं व्हाई शुड आई रजिस्टर अ कॉपीराइट. कॉपीराइट मुझे क्या फायदा देने वाला है? व्हाट हैपेंस इज कि टुडे इफ आई हैव टेकन अ फोटोग्राफ, अ सिंपल एग्जांपल वी कैन टेक, इफ टुडे इफ आई हैव टेकन अ फोटोग्राफ
I've made an application for copyright registration, and a certificate is granted. On that certificate, the date is mentioned. So the point is, if tomorrow, if a person copies my painting or a photograph or uses the photograph or painting, तो क्या होता है, मुझे डेट नहीं प्रूफ करनी है कि मैंने इस तारीख को वो फोटोग्राफ लिया था, इस तारीख को मैंने पेंटिंग की थी, because I have a registration certificate in my hand. That automatically proves that I'm using that particular, rather I've created that particular document on that particular day. That is important. Otherwise, what happens is कि we keep on proving कि नहीं मैंने इस दिन को ये पेंटिंग की थी. But then that becomes a contentious issue. Other side, what he'll say, मैंने आपसे पहले पेंटिंग की थी. So to avoid such kind of a tussle, what copyright says कि नहीं आपने इस दिन पे की थी, because we get a certificate of registration. Now another question which will be addressed in the next slide is trademark and copyright. What is the difference between the two? Because वो जानना बहुत जरूरी हो जाता है. Yes. So here is the slide. Trademark के केस में हमारा ट्रेड नेम है. The name which we have given to our business, I would say a distinct and a unique name, because that is important, what we need to do. So logo, mark, jingle, tagline, label, headline, unique word, so everything forms part of a trademark. Now under copyright, what happens is literary work, dramatic work, musical work, artistic work, cinematography work, sound recording, all these things form part of a copyright. So there is a distinguish between trademark. क्योंकि बहुत से लोगों को क्या होता है कि मेरा ये word है, I want to get it copyright. So probably that word cannot be a copyright, but it can be a trademark. So ये जानना थोड़ा जरूरी हो जाता है कि what can exactly go under copyright, what can exactly go under trademark. Now example इसका और एक दे सकते हैं कि if you write a storybook, the classic example I can give, if you write a storybook which contains certain images which also has got a write-up, so what to do? There are two things in the same book. So the write-up will go under literary work and the images will go under say images. So there are two things what we can register. Images जो है वो photography या images के अंदर, so particularly there is a literary section and there is an image section under copyright while registering. So image के अंदर हमारे images जाएंगे, design जाएगा, drawing जाएगा, and then literary work के अंदर all our literature and material will go under literary work. Now, before concluding, I would quote one, or I would say one quote. Intellectual property rights violations are a crime, and we don't believe we should negotiate crimes with our trading partners. Absolutely important. थोड़ा सा इसका मैं हिंदी में भी बोलना चाहूँगा. हम बिजनेस कर रहे हैं. We are creating intellectual property, and when any person copies our intellectual property and we have not registered it, what we are doing? We are negotiating our IP with that person who has copied our IP. ये कोट किसने? कार्लोस ने ये कोट दिया था. Who was a secretary to the United States. So basically, it's a very important quote. We don't want to negotiate our IP with a person who has not registered it and who has just copied it from us. So protection of our IP is very, very important. Let it be copyright, let it be trademark, maybe patent or design, any intellectual property which you are creating, because the moment we start our business, on the day one itself, the IP is created. It's not कि IP हम लोग बाद में create हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है. और हम लोग ऐसा भी नहीं सोच सकते कि मेरे पास थोड़े पैसे इकट्ठे होने तो then I start registering my IP, because your business will start getting copied from day one itself. क्योंकि लोग competition करने के लिए बैठे हैं. They'll observe your business. The moment your business grows, they'll start copying minute things of your business. If you are into manufacturing, your design may get copied. So each and everything can be copied. हम लोग यहाँ पे देखते हैं बहुत बार. What we say is a Chinese product है. At times it may or may not be registered because it's copied. The products are copied. 1:1 they are copied. Mobiles, we get certain things are copied. Electronic products are copied. So we need to protect ourselves. We can file an infringement case against them. So that is the reason why we need registration of our copyright, and we don't want to negotiate with the violators.
So with that, I would like to say thank you for your patient listening and attending this wonderful seminar. थैंक यू हमारे दर्शकों को इतनी विस्तार से ट्रेडमार्क और कॉपीराइट के बारे में जानकारी देने के लिए, और साथ ही में दर्शकों को अभी हमारे ये क्लियर हो चुका होगा कि ट्रेडमार्क और कॉपीराइट में डिफरेंस क्या है और कैसे वो फाइल कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते थोड़ा सा सवालों की तरफ। तो मनोज जी का यहाँ पे सवाल है कि ऑब्जेक्टेड मींस द पार्टी डिडंट गॉट द ट्रेडमार्क। See, objected in case of a trademark is that doesn't mean कि it is not granted. जब तक हम लोग बहुत बार सुनते हैं कि जब तक किसी केस का फैसला नहीं हो जाता या रिफ्यूज नहीं हो जाता, till that particular point आपका मार्क इज नॉट रिफ्यूज्ड। ऑब्जेक्टेड मतलब क्या होता है कि एक तो ट्रेडमार्क रजिस्ट्री ने आपके मार्क के लिए ऑब्जेक्शन रेज किया है बिकॉज ऑफ सर्टन ग्राउंड्स, या तो फिर दैट इज अपोज्ड बाय द जनरल पब्लिक हु इज यूजिंग दैट मार्क अंडर सर्टन ग्राउंड्स, आई कैन से। सो जब तक, क्योंकि पहले तो क्या होता है कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्री में हियरिंग होगा, उसके बाद यू डेफिनेटली हैव अ राइट ऑफ अपीलिंग टू हाई कोर्ट इवन इन द सुप्रीम कोर्ट। So till the point of time your mark is not refused by say Supreme Court, we cannot say that the mark is not granted. So can you use the mark till that point of time? Yes, you can use the mark, provided an order a specific order stating that you stop using the mark is not issued. Tab tak you can use the mark. थैंक यू गौरव सर। आई होप मनोज जी को उनका जवाब जो है वो मिल गया है। तो दूसरा सवाल ये है योगेंद्र जी सर से है, हाउ कैन आई फाइंड आउट इफ समवन एल्स इज यूजिंग अ ट्रेडमार्क, आई एम इंटरेस्टेड इन रजिस्ट्री। इफ यू विजिट ट्रेडमार्क रजिस्ट्री वेबसाइट IP India, तो ट्रेडमार्क रजिस्ट्री के वेबसाइट में वहां पे सर्च ऑप्शन है। सो यू हैव टू विजिट द सर्च ऑप्शन, क्लिक ऑन दैट, वहां पे डिफरेंट क्लासेस आर मेंशन। सो जैसे हमारी पहले इसमें व्हाइल रजिस्टरिंग वो प्रोसेस में हमने डिस्कस किया था कि देयर आर सर्टेन क्लास एसोसिएटेड विद योर प्रोडक्ट्स। सो अंडर दैट पर्टिकुलर क्लास यू हैव टू स्टेट अ स्पेसिफिक ट्रेड नेम या even few words of your trade name, more than 3 words you need to mention over there, and you can see what all similar marks are existing in that particular class. So likewise you can check for all the 45 classes what are at present under the trademark registry. तो इस हिसाब से सर्च कंडक्ट आप कर सकते हो। थैंक यू सर। और किसी के मन में कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, अनम्यूट करके भी आप पूछ सकते हो। एक्सक्यूज मी सर। यस सर। इंग्लिश कर रहा हूँ, सुनाई दे रहे सर? यस सर, बोलिए। हाँ सर। सर जो कॉपीराइट ऑब्जेक्टेड किया है आपने, ट्रेडमार्क ऑब्जेक्टेड है, तो वो टाइम पे क्या हम लोग उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं? ऑनर ऑब्जेक्शन ले सकता है क्या? मतलब आपका कहना है कि ऑलरेडी ऑब्जेक्टेड है, लेकिन वो ऑब्जेक्टेड किसका है फिर? मतलब आपको ऑब्जेक्शन रेज करना है या आपका मार्क ऑब्जेक्टेड है? नहीं, ऑब्जेक्टेड जो हुआ रहेगा, एक केस आया हुआ है, इसके लिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। इफ ऑब्जेक्टेड है तो ऑनर की जो पार्टी जिसने कॉपीराइट ट्रेडमार्क के लिए एप्लीकेशन किया है, वो ऑब्जेक्शन पुलिस केस फाइल कर सकता है क्या? प्राइमरी लेवल पे ना पुलिस ऑब्जेक्शन अगर ऑपोजिशन में है, हाँ, तो ऑपोजिशन में ट्रेडमार्क रजिस्ट्री विल सॉर्ट इट आउट, क्योंकि जब तक आप वो प्रूव नहीं करते ना, क्योंकि सिर्फ पुलिस केस इज अ क्रिमिनल ऑफेंस, यस, दैट अमाउंट्स टू फ्रॉड। क्या होता है, हर मैटर में 2 रेमेडीज है, एक सिविल है और एक क्रिमिनल है। जब आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्री में अपोज करते हो इट बिकम्स अ सिविल केस, और पुलिस में जाते हो तो इट बिकम्स अ क्रिमिनल केस। सो देयर आर 2 डिफरेंट केसेस ऑल टुगेदर। सो वो दोनों अलग अलग चीज है। नहीं, लेकिन सर जो ओनर क्या हमारे पे ऑब्जेक्शन ले सकता है क्या, वो पूछना चाह रहा हूँ। जिसने अभी ट्रेडमार्क रजिस्टर के लिए एप्लीकेशन किया रहेगा और वो ऑब्जेक्टेड है, ओनर आपके ऊपर ऑब्जेक्शन तभी ले सकता है अगर उनका मार्क रजिस्टर्ड है। ओके सर, थैंक यू। क्योंकि अगर उनका मार्क रजिस्टर्ड नहीं है ना, देन दे विल हैव टू फॉलो रेमेडी ऑफ अ सिविल कोड, तो वो ट्रेडमार्क रजिस्ट्री में जाके ऑब्जेक्शन नहीं ले सकता। अगर आपने एप्लीकेशन फाइल किया, इसका मतलब आपका एप्लीकेशन ट्रेडमार्क रजिस्ट्री में है, एंड जो ओनर है ट्रेडमार्क का, उन्होंने अगर उनका मार्क रजिस्टर नहीं किया है, तो they will have to go to a civil court, then probably in that case they cannot come to trademark forum and object or oppose to your mark particularly. Okay sir, thank you. Yes, thank you very much. Thank you.
यस, और कोई सवाल? और आपका सवाल अगर आप यहाँ पर आपको नहीं ये होता है तो आप हमें वापस भी कांटेक्ट कर सकते हो एट deAsra फाउंडेशन। deAsra फाउंडेशन के साथ गौरव कुलकर्णी सर जैसे एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, जो ये वेबिनार खत्म होने के बाद भी आप हमारे फोन लाइन पर डायल कर सकते हो। और आपके जो कुछ भी सर्विसेज है, हम deAsra फाउंडेशन की ओर से हम ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये जो सर्विसेज है वो भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो आगे की सर्विसेज अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए या आपको ये सर्विसेज लेना है या गौरव सर से बात करनी है तो आप बेझिझक deAsra फाउंडेशन के कनेक्ट में आ सकते हो और आगे आपके सवालों का समाधान पा सकते हो। तो थैंक यू गौरव सर, आज हम deAsra फाउंडेशन के दर्शकों के लिए समय निकालने के लिए मैं आपका deAsra फाउंडेशन और सभी दर्शकों की ओर से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। दूसरा, मैं अभी सभी दर्शकों का यहाँ पे आभार मानता हूँ कि आपने इस सेशन को इतना भर भर के प्यार दिया है। आपके और आपके सपोर्ट से ये सेशन बहुत ही अच्छा हुआ है। दूसरी चीज, जैसे कि गौरव सर ने एक बात बताया, वो मैं यहाँ पे और एक बार दोहराना चाहूंगा कि ट्रेडमार्क और कॉपीराइट जो है, इट्स नॉट अ कॉस्ट। ये आपकी कॉस्ट नहीं है, ये आपके बिजनेस के लिए एक इन्वेस्टमेंट है जो आगे चल के आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स दे सकती है। तो इसी लाइन पे आज ये वेबिनार, ये प्रोग्राम हम समाप्त करते हैं। Thank you, Gaurav sir. Thank you all the participants. Thank you all the participants, those who have joined from Facebook as well. Thank you all. Thank you very much, deAsra, and thank you all for joining this webinar. Thank you once again.